good diet and living a healthy life. So, in today's video, I'll be sharing about how to deal with losing friends. Right. So, you must all be very much excited to listen about this topic because it's really a very, common thing in the lives of, especially in the lives of youngsters. So, I'll start my, video, and, I'll be sharing this topic in a very, small points. Right. So firstly, I'll be sharing that sometimes in our mind, a type of thought comes that my friend doesn't want to talk to me anymore, and I'm really hurt. So what to do in this situation, right? So just keep a single thing in your mind. I'll give you one beautiful example that young people's hearts are like sensitive thermometers, right? So 1 minute you feel everything is so great, right? And the next you suddenly feel so down that you're convinced you must be the most, worthless person in the world. This happens, it is absolutely true, right? एक मोमेंट ऐसा होता है कि यार कितना मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड एकदम से ही हम डाउन चले जाते हैं, राइट? और ऐसे लगता है कि यार मतलब मेरे साथ ही क्यों हुआ, और मैं मतलब मुझे तो रहना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में, है ना? ऐसे होता है. सो फर्दर आई विल बी शेयरिंग दैट I, assure you that it is completely natural to experience such extremes of, emotion like, problems with friends, or heartache over love, or the illness of family members, right? So, over here, self doubt is really very, mm, common, like to face in the age of, you know like in teenagers, like to face these kind of issues is really very common, right? Self doubt is really very common. So self doubt while young, so you need not to compound your sadness by worrying that you feel that way, right? Feeling that way means like feeling worthless. You should, be proud of yourself. You should, whenever you wake up, right? Every day you wake up, you should just smile and, thanks to God. Like pray in your heart that thank you so much, God. I'm able to see one more day of my life. I do this thing. So further, I'll be sharing that it is really very important to recognize your friends, right? It's important that you recognize that your friends are experiencing the same hardships as well. Abhi, like I shared with you that youngsters have, this is the very common, like most youngsters जो go through करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यही है कि बहुत जल्दी like young age में हमारे काफ़ी like we do lose our friendship, राइट? तो किसी भी रीज़न से लाइक हो जाती है फ्रेंडशिप ख़त्म. आई गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, राइट? सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर लाइक अ मिरर, राइट? इफ़ यू आर थिंकिंग if only so and so were a little more nicer to me, I could talk to him about how I feel. That person is probably thinking the same, राइट? तो ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में कि अगर वो मेरे से थोड़े से और अच्छे से बात करता, अच्छे से लाइक बात हो जाती, तो मैं उससे और अच्छे से शेयर कर पाती, बट उसने तो एटीट्यूड में बात करी, ये वो. सो बट जस्ट कीप थिंक वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सच इश्यूज, तो
तो हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो हो सकता है आपसे ज़्यादा लाइक उसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, और क्या पता आप उसकी लाइफ में रे ऑफ होप बन के जाओ, राइट? The important thing is that we cannot read what's in like another's heart, right? So the human heart is much too complex. People do change, right? ये बिल्कुल सच है. इधर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि लाइक हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि बेटे किसी से भी इतना अटैच ना हो जाओ कि आपको आगे जाके सफ़र करना पड़े. लाइक अगर लाइक हम किसी से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो जब लड़ाई होती है फिर हम भी सफ़र करते हैं और हमारे फिर पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, राइट? सो ऐसे क्यों लाइक सफ़र कराना ना उनको. सो डोंट गेट सो अटैच्ड विद आई नो कि ऐसी नेचर होती है बहुत लोगों की कि बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं वो. तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि वन थिंग इन योर माइंड कि पीपल डू चेंज. कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह उसने रंग बदल लिया. सो दिस रियली हैपन्स, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. यू नेवर नो कि कब आपका फ्रेंड कौन से पॉइंट पे हर्ट हो जाए और आपकी कोई कौन सी बात उसको पिंच हो जाए. यू नेवर नो, राइट? So people change. It's as simple as that. If your friend share the same feelings about the friendship as you do, then it is likely to last a long time, right? But if he or she decides to opt out, then it will be a short-lived friendship, right? So further, um, now, um, one question comes in mind that how do I deal with rejection, right? ये बहुत लाइक कॉमन क्वेश्चन है कि कैसे फेस करूँ मैं रिजेक्शन को, ठीक है? सो इन द फेस ऑफ रिजेक्शन you must learn to be courageous. Being courageous is really very important. Like अब मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपका फ्रेंड लाइक हो सकता है कि बहुत सफ़र कर रहा हो एंड उसको किसी से बात नहीं करनी हो. होते हैं ना कभी कभार ऐसे डेज आते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, राइट? सो क्या पता आप लाइक जब वो बहुत डाउन हो तो क्या पता कि आप उसकी लाइफ में रे ऑफ होप बन के जाओ. तो इधर मैं ये बताऊंगी कि यू शुड हैव करेज. करेज इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. करेज होगा देन you will be able to ask that person what that person is going through कि क्या हुआ, share it with me, right? So frank होना is really very important, right? So um, further I'll be sharing that it is important to believe in yourself, right? Believe is really very important. I also shared in my previous videos, right? So I'll give you one example that you should be like a sun, right? Like the sun which shines on serenely, even though not all the heavenly bodies reflect back its light, and even though some of its brilliance seems to radiate into empty space. So you should be like a sun, राइट? तो आप जैसे रे ऑफ होप बनोगे, ठीक है? तो यू विल शाइन एज ब्राइट एज यू कैन, राइट? आप किसी को होप दोगे कि प्लीज़ मेरे से शेयर करो एंड मतलब ऐसा बॉन्ड क्रिएट करो. सो दैट पर्सन विल फील वेरी गुड कि ही और शी विल आस्क यू कि यार कैसे मतलब इतना तू इतनी पॉजिटिव कैसे है, या तू मतलब कैसे है इतनी पॉजिटिव. यू आर यू शुड बी लाइक अ सन, you know so I'll quickly end my video. So while those who reject your friendship may sometimes fade out of your life, right?
So keep one thing in your mind, that the more you shine your light, the more brilliant your life will become. This is absolutely true. So that's all in today's video. I hope you all liked it. So give it a thumbs up, and thank you so much for watching my video. Spread positivity all around you and live your life like a sun and shine as bright as you can. Thank you so much, and do subscribe to my YouTube channel, that is Unbottle Happiness, and share my video as much as you can, and do comment on my video if you want to, me to share on topics, like you can suggest. So thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye and take care.